अच्छा तो शुरुआत इससे करता हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ कि मैं याद याद दोबारा आया हूँ. दिस इज़ माई सेकेंड टाइम हियर एंड अजीत सर थैंक यू फॉर हैविंग मी एज ऑलवेज. आई वाज अ बैड स्टूडेंट. मुझे पढ़ाई में कोई शौक नहीं था और जब बड़ा हुआ तो मैंने सोचा कि क्यों नहीं था शौक. शौक रहता तो शायद मेरे दिमाग में और भी अच्छे ख्याल आते, मैं और कुछ अपनी ज़िंदगी के साथ कुछ और कर पाता. लेकिन इसीलिए मेरे दो बेटे हैं, उन्हें मैंने पढ़ाया. मैं चाहता था कि एजुकेशन उनकी पूरी हो क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट यू नो. हम लोग बच्चे अभी तुम लोग सुन रहे हो, बोल रहे हो यार पढ़ाई में तो मज़ा नहीं आता, हमारे मम्मी पापा हमें ज़बरदस्ती भेज देते हैं. लेकिन जब आप बड़े होगे आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि एजुकेशन इज़ इम्पॉर्टेंट बिकॉज नो मैटर व्हाट प्रोफेशन यू चूज़, if you educate yourself, it'll help you if things don't work out for you in the profession you are. And if you are doing well in your profession, then you can improve and get into other things and make your life, more easy. So, my son graduated from NYU Stern. He's done finance. I mean, I'm from the film world, but I wanted my son to study, and he graduated with honors. So I was really proud of him. And all I can say is, I love you all for giving me so much love. I'm overwhelmed. I don't know, I feel I'm dreaming right now in my life that itna pyar mil raha hai mujhe har taraf se, and I'm just grateful to God. And also I need you all to know that you have to have self-belief. Self-belief makes you positive, there's this energy that's created inside you which attracts people around you. And if you believe in yourself, you'll always be able to achieve things in life. But stay humble. Always stay humble. Be grateful for whatever you achieve. And don't take life for granted. Thank you so much. थँक्यू सर. कुठलाही